नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिंजा एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड का एशिया लिबेक्स 2025 मेगा लेबोरेटरी शो चंडीगढ़ ट्रेड ग्राउंड सेक्टर 17 में आज शुरू हो गया है। एशिया लिबेक्स प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक माइक्रोबायोलॉजी, खोज, बायोटेक्नोलॉजी, उपकरण, रसायनों और उपभोग्य सामग्रियों पर सबसे बड़ी और समर्पित प्रदर्शनी आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्ले ग्राउंड में शुरू हो गई है, जो कि 22 मार्च तक चलेगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री संदीप जैन, MD एक्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और अशोक विंडलास, अध्यक्ष सह संस्थापक विंडलास बैठक द्वारा किया गया। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। I am founder chairman of Wellness Biotech Limited in Dehradun, and for this organization they are organizing this very exhibition for the analytical products and instruments, and it's a unique, nicely organized event, and we have come here with all the benefits are here. Some events will be taking place for 3 days, and we are joining this thing, and more good for the industry itself and the technical persons who can get a lot of insight from the development which is happening in India itself. So I think whoever is coming and attending it will get so much of knowledge from this. Thank you. I am founder chairman of Wellness Biotech Limited. It is a company in Uttarakhand, it is a publicly limited company, and I have been invited here to this well organized exhibition of analytical instruments. And people from all over the India has come here, and for the benefit of the industry. This is pharma industry, chemical industry, and I have seen a lot of instruments and other accessories which are being displayed here. They have very good manufacturing. Manufacturers have come here mostly in the years earlier. All the instruments used to come from abroad, and now it's being made in India, and a lot of innovation has been done here, and it is in the benefit of the industry. Also, our technical staff have come here, not from the companies there, and they are conversating themselves with newer methods, newer development of the testing methods. So it is so good for both area of our here, from Uttarakhand, Himachal, as well as Punjab. We are benefiting from such exhibitions, and awareness is coming up. So I think such exhibition will contribute a lot for us, and that's why I am here. And it's very well organized, and to the international standard, I can say. So thank you very much for all the work to the organizer. I wish them great success. Myself, Dr. Birdi. I am a director of Prevedium Pharmaceuticals, which is a group company of Apollo Tire Group. And I am very thankful to the all organizers to invite me over here. As we all know, India is growing in the pharmaceuticals, and as per our Honorable Prime Minister, we called as a world pharmacy. So this type of all exhibitions of a quality equipments always help us to build our product with the quality, and also to analyze R&D
and this will also help us to market our product in all over the world, whether it is a regulated market or a rest of world or Indian market. So I am really excited to see all the counters, which shows a very new technology, advanced technology for a quality control of all our formulations in the API we manufacture in India. Thank you very much. मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह एज ए जीएम टेक्निकल टेक्निकल जंक्शन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एशिया लैब्स की पूरी टीम को, स्पेशली जसपाल जी को, पूनम जी को, कि वो जो लैब से रिलेटेड एक्सपो हैं वो देश के अलग अलग कोनों में उसको सुव्यवस्थित ढंग से सुयोजित कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम ही है, आज माँ भारती और भारतवर्ष दोबारा अपने खोए हुए जो तमका है जिसको बोलते हैं विश्व गुरु, उसकी ओर अग्रसर है। और अगर मैं आज बात करूं कि इंडिया 5वें पायदान पर है आर्थिक स्थिति में, बहुत जल्दी ही हम तीसरे लेवल पर आने वाले हैं, तो उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और फार्मास्यूटिकल में अगर हम R&D की बात करें या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो किसी भी सेक्टर का जो डिपेंडेंसी रहती है वो क्वालिटी पे रहती है, और क्वालिटी इस्टेब्लिश होती है इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो दोबारा मैं एशिया लैब्स के सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इंडिया को जिसको आज विश्व की फार्मेसी बोलते हैं, उसमें क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्नोलॉजी R&D और QC से रिलेटेड, क्योंकि क्वालिटी के बेस पे हम टिक सकते हैं, उसके लिए देश के कोने कोने में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या हमारी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसके एनालिटिकल पार्ट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। Vice President, Aristo Pharmaceuticals. As you must be knowing, Aristo Pharmaceuticals is one top 10 pharma company in India with around 16,000 crore. And to be honest, this Labs, Asia Labs, it's one of the best platform. I must congratulate them, the management and everybody else over here, that they are doing their 15th show over here. And this show is so successful, it has been managed so nicely, and it is going to be so informative for the people over here, especially North region. That's gradually I hope it's second in Chandigarh, and gradually the way things are improving, it's going to be the lifeline of the people in the North. Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.